On the behalf of Oculoplastic team, Armed Forces Institute of Ophthalmology, I warmly welcome you all to this instructional course. This instructional course is structured into 4 segments. Today we will explore anatomy, indications, equipment, and surgical techniques of endoscopic approaches. This course is designed for ophthalmologists and oculoplastic surgeons who wish to expand their surgical skills. By the end of this instructional course, you will be able to understand the endoscopic anatomy of orbit and lacrimal drainage system. Identify indications, contraindications for endoscopic surgeries. Gain insights into instrumentation, surgical navigation, and equipment. Describe step-by-step techniques for common endoscopic procedures and recognize potential complications. Coming on to the anatomy. The first image presents the lacrimal drainage system in coronal section. Here you can see the inferior turbinate is inferior to the middle turbinate. In the second picture, the surgeon's perspective is reoriented such that this relationship becomes anterior to posterior. This is a picture of right nostril showing inferior turbinate, septum, middle turbinate, and maxillary ridge. The first image demonstrates the anatomical relationship of the lacrimal sac relative to the maxillary ridge and middle turbinate axilla. Notably, the lacrimal sac extends 8 to 10 mm beyond the inferior limit of the axilla. Therefore, surgical incision should be planned to accommodate this extension to achieve maximal exposure. Complete exposure of lacrimal sac enables full incision and proper flap positioning. Coming on to the anatomy of orbit. The orbit is divided into 4 spaces: intraconal, extraconal, subperiosteal, and subtenon. This is extraconal, this is intraconal, this is extraconal, this is subtenon, and just below the periosteum is subperiosteal space. Optic nerve, oculomotor nerve, abducens nerve, and ciliary ganglion lie in the intraconal space. In the upper part, above an exit pin passing through the optic nerve, the ophthalmic artery, mesociliary, and superior-ophthalmic vein can be seen. Ophthalmic artery, mesociliary, and superior-ophthalmic vein. It is crossing lateral to medial. These vital structures, which were initially intraconal, they become extraconal in the mid-orbit space. These are important because they are vulnerable to the they are vulnerable during endoscopic nasal surgery. Other thing which is important to understand in the orbit surgery is the middle turbinate shape and its attachment. Middle turbinate has 3 parts. One is the anterior or forward wing, the other is posterior wing, and the third one is lateral wing. Lateral wing is important to understand because this part is attached to the lamina propria. This part is specifically called basal lamella. Coming on to the instruments. There are mainly 3 types of endoscopes used: 0 degree, 30 degree, and 70 degree. In our setup, we use 0 and 30 degree. A 0 degree gives a straight view, ideal for anterior nasal structures, and a 30 degree provides an angle view, useful for seeing around corners and into the hidden areas. This slide shows comparison of nasal view with different endoscopes. Light source used is xenon light transmitted through a fiber optic. Nasal speculum is used to inspect the nasal cavity and also used while placing soap gauze. Towel holder to secure sheets and gauze pieces.
In the first frame, probing instruments are shown. In the second frame, blunt pegostome elevator is shown, and in the third frame, suction probe of different sizes is shown. The first forceps is called teleforceps. It is an angle long-reaching instrument used to grab or remove tissue from narrow nasal cavity. The other two forceps shown are called Lux forceps, which are slender and slightly curved, designed for precise manipulation of bone fragments. Kerosene punches used to punch the bone comes in different sizes and angle. Here, this one is 45 angle, this is 90 degree, this is front biting, and this is back biting. Sorry, down biting. In the first frame, lacrimal bone awl is shown, which is used to pierce the lacrimal bone in cases of hard bone. Second frame shows groove director and Crawford retrieval. And the third picture shows bicanalicular lacrimal intubation. Niotaser is minimally invasive tool used in both endonasal and transcanalicular DCR. The setting we use in our setup is our power is 5 watt and pulse mode. Pulse duration is 2 seconds and pulse range is 0.4 seconds. Microdebrider is a rotating blade which within a suction tube allowing simultaneously cutting and removal of tissue. The first picture shows sickle knife which is used for making precise incision in the nasal mucosa. The second picture shows backbiter which is used to remove small bone fragment by biting backward. Coming on to the surgical approaches. First of all, I will show endoscopic DCR. Endoscopic DCR is basically a formation of fistula between the lacrimal and nasal cavity. It offers better cosmesis, reduced risk of scarring, and faster healing. Also, simultaneous treatment of any nasal or sinus issues. Patient is positioned in reverse Grindalenberg. This is important because it reduces venous pressure and bleeding, making it ideal for endoscopic surgery. First is the identification. This is inferior turbinate, this is septum, and here is middle turbinate. Nasal pack is placed between the middle turbinate and lateral wall. It improves endoscopic access and reduces bleeding. After removal of nasal pack, local is injected into the lateral wall along the maxillary ridge and into the middle turbinate. Keeping in mind the location of sac, start incision above the axilla of middle turbinate. The superior incision extends 10 mm onto the frontal process of the maxilla. The second vertical incision is made up to the inferior turbinate, and in our setup, we don't give the horizontal third incision, instead we give in the posterior wall. Nasal mucosa is flat and underlying bone is exposed. In the second frame, maxillary bone and lacrimal bone is visible. Kerosene punch is used to make the bony ostium. A high bony ostium ensures full exposure of lacrimal sac. After making
After making 8 to 10 millimeter bony osteum, you can appreciate this compressible structure is lacrimal sac. Gel was injected into the lacrimal sac to achieve sac dissection prior to making incision in the lacrimal sac. After identifying the lacrimal sac, incision is made along the whole length to ensure complete opening of the sac. Bicanaliclar intubation was inserted and probe retrieved with the help of Tilly forceps. Coming on to the endoscopic orbital decompression. These are the endoscopic approaches used for orbital surgery. We will mainly discuss the transnasal endoscopic approach. Indications and contraindication of orbital decompression are as flash. While imaging described lesion as extracornal or intracornal or related to the optic nerve, endoscopic surgery meets the surgical clock for accurate orientation-based surgery and safer dissection. Surgical clock is used to locate tumors, nerve, fracture, muscles, and vessels in a shared spatial reference. For lesions located between 1 to 7 o'clock, they can be approached via transnasal approach. After medialization of middle turbinate, we can appreciate uncinate process. This is basal lamella and this is bulla ethmoidalis. In the second frame, the L-shaped structure behind the bulla ethmoidalis is basal lamella. This is the third part of the middle turbinate, which is attached to the lamina praepatia. In the last frame, all the structures can be identified. This is the anterior wing of middle turbinate. This here is uncinate process. This is bulla ethmoidalis, which I will explain later. Here is basal lamella and this is suprabular recess. To gain access to the medial wall of orbit, first the uncinate process was everted. Uncinectomy was done. Now behind the uncinate process, we can see bulla ethmoidalis. I will now explain what is bulla ethmoidalis. The bulla ethmoidalis is a hollow structure which lies medial to the lamina praepatia. It is behind the uncinate process. It has 6 walls. This is very important to recognize because after we remove the bulla ethmoidalis, we will be able to approach the orbit via lamina praepatia. As you can see in the first frame, that bulla ethmoidalis is punctured and you can see it is a hollow structure. All the walls of bulla ethmoidalis were removed. As the walls were removed, basal lamella and posterior ethmoid cells were visible. This is basal lamella, this is posterior ethmoid. Lamina praepatia is identified by pressing the globe externally and seeing the movement of the wall. Here you can see the wall is moving. In the first frame, with the help of blunt periosteum elevator, lamina praepatia is elevated. Sickle knife is used to give incision, to make incision in the periorbita, first superiorly and then inferiorly in the posterior to anterior fashion. Orbital fat immediately prolapsed. With the help of microdebrider, orbital fat is removed and medial rectus muscle is recognized.
Just an overview after the orbital decompression. This here is middle turbinate. This is fat. This is medial rectus. This here is optic nerve, and this is carotid. This is a carotid optico-carotid recess. Complications of endoscopic surgery as such. Thank you. 0 degree है, usually हम 30 degree से कर रहे होते हैं. Hello. Orientation एंडोस्कोपी वो ये है कि हमने बेवल को towards lateral wall of nose की तरफ रखना है. उसके बाद से ये वायर का क्वेश्चन होता है जिस साइड पे भी हो, उस साइड पे बन रही है, इस साइड पे बन रही है. देन होल्ड हमने क्या करना है अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड में, लेफ्ट हैंड में यूजली होल्ड करते हैं. जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको इधर और बाकी थ्री फिंगर से ऐसे होल्ड करते हैं. जो हमारी एल्बो है दैट शुड बी विद आवर बॉडी. और जो एल ऑफ नोज होता है इसको हम एज फल्क्रम यूज कर रहे होते हैं स्टेबल करने. अच्छा स्ट्रक्चर्स क्या दिस ये मिडल सेप्टम दिस राइट साइड और लेफ्ट साइड इज लेटरल ऑफ ठीक है तीन साइड का लेटरल. ये टर्बिनेट ये मिडिल टर्बिनेट है. और ये जो रिज आ रही है इसके लैटरली ये हमारी मैक्सिलरी रिज है. ये ठीक वो है आपके पास पॉइंटर देना पॉइंटर. This is middle turbinate. मैम आप मेरा ये मैक्सिलरी रिज है हमारी. और इसी के ऊपर बेसिकली इसी के नीचे हमारी लैक्रिमल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिल होता है जिसको हम एक्सपोज करते हैं. तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. This is the aloe of the मिडिल टर्बिनेट axil of the तो लैक्रिमल सैक जो है ना वो इस एरिया में है. इधर से भी इसमें इस एरिया में लैक्रिमल सैक. तो जहाँ कॉमन कैनालिकल से जब ओपन हो रहा होता है तो वो लैक्रिमल सैक का फंडस से थोड़ा नीचे. तो दिस इज द septum. This is the lateral of the and this is the middle turbinate. ठीक है. अब आप कौन करना चाहोगे? आप करना. नहीं आप करना. अच्छा ये देखिए ये एलो ऑफ द नोज ये जीरो डिग्री है. ठीक है ना. और हाँ इसमें इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हैं. तो सैक की साइड से ये लेटरल वॉल ये लेटरल वॉल है. तो लेटरल वॉल की तरफ सैक ठीक है जी. और जो ये ऊपर से आ रही है मिडिल टर्बिनेट है. इसके नीचे जो रास्ता है वो मिडिल मीटस है. अब जो ये साइड है ये नेजल सेप्टम की साइड है. ये वाली साइड इज नेजल सेप्टम. दिस वन इज नेजल सेप्टम. और ये है इंफीरियर टर्बिनेट जहाँ पे एनएलडी नॉर्मल खुल रही है. ठीक है. दिस इज द इंफीरियर टर्बिनेट. ये इंफीरियर टर्बिनेट है. दिस वन इज द इंफीरियर टर्बिनेट. दिस वन इज द मिडिल टर्बिनेट. एंड ये एक्सिला ऑफ द मिडिल टर्बिनेट है. थोड़ा ऊपर आपका एक्सिला. ये एक्सिला ऑफ द मिडिल टर्बिनेट. ये आपके लैंडमार्क्स हो गए. अच्छा क्या. फिर उसके बाद अभी आपकी सेप्टम की साइड पे राइट साइड एक्सीलेंट. और ये कौन सी लेटरल ऑफ द नोज है जिसका आपको वो है ये मैक्सिलरी रिज है. दिस वन इज द मैक्सिलरी रिज. यहाँ पे जिस तरह वो वीडियो में दिखा रहे थे तो इस म्यूकोसा को आप यहाँ से पहले इंजेक्ट करके फिर लिफ्ट. यस जो हमारे पंचेस हैं पंचेस में हमने रिज थे. लेकिन इसमें भी एक और प्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि जो ज्यादा सुपीरियर जाने के लिए जिस एंगल्ड है एंगल जो आपके पास पंचेस हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप 90 डिग्री करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इस तरह होगा. वो पार्ट होते हैं बोन को जब हम करते हैं निबल तो उसके लिए अच्छा होता है डाउन बाइटिंग वाला. डाउन बाइटिंग. और जो जहाँ से एंगल होती है वो वहाँ पे एंगल जो है ना वो 45 डिग्री वाला वो सबसे अच्छा होता है. स्पॉन मिडिल टर्बिनेट और लेफ्ट वॉल के
के बीच में, क्योंकि हमें वहीं पे सर्जरी, हाँ सर्जरी वहाँ चाहिए तो वहाँ हमें ज़्यादा चाहिए। मैडम इसको लाइट से होल्ड कर दो। इसमें होल्ड करने के पास साइंस नहीं है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द, ये है फोकस है, फोकस हो रहा है, वो पूरी फोकस हो रहा है, ठीक हो गया, ये फोकस है। और फिर इसमें एक वाइट बैलेंस है, एक में ये दिस इज द फोकस, ओके, दिस इज द फोकस, ठीक है जी। और इसमें एक वाइट बैलेंस है, एक मैग्नीफाई है, एक का वो कैप्चर करना है, तो मतलब हर एक के डिफरेंट फीचर होते हैं। वाइट बैलेंस के लिए किसी वाइट सरफेस पे आप ये रखें ना ताकि हमें कलर्स सारे नजर नहीं आए, कलर्स, ताकि कलर्स रेड रेड नजर आए, येलो येलो नजर आए, इस तरह से। ये हो गया। अब आप आ जाए, अच्छा अब हम लेफ्ट हैंड से पकड़ लें, राइट हैंड से आपके हाथ में कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से एक इंस्ट्रूमेंट ले लें, जरा वो ये आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लें, ये नहीं है तो ये पेरियोस्टेल एलिवेटर वो है, आई एम सॉरी जैसे आप आगे साइड पे, अब आप पेशेंट के ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, आप राइट हैंड में आपने ये पकड़ लिया और साथ ही आप अंदर चले जाए, पहले आप एंडोस्कोप से चले जाए, पहले एंडोस्कोप अंदर और ये एलअप थोड़ा सा इसे करके ऐसे ये एक से पहले आप देखते हैं आपने सीधा पकड़ा था ना, इसी पे थोड़ा सा इस तरह ये हमें पता है सर स्ट्रेट लिए नहीं स्ट्रेट अपनी आई पे देखा ना, वो देखिए वहां स्ट्रेट नजर आ रही है, मैंने उसी से बाहर से ओरिएंट किया हूं मैं, ठीक है ना, स्काई की तरफ होगी 90 ये ब्लू है रेड वाला है। हाँ नहीं वो तो आप चेंज कर सकते हो जैसे, लेकिन ये कि ना अभी आपको व्यू जो सही मिल रहा है, अभी साथ पे ये पकड़ सर पहले चले जाओ, हाँ चले बता देखो ये इंफीरियर टर्बिनेट, ये एला है। अब आप अंदर जाएं, थोड़ा सा लेटरल साइड पे देखें, लेटरल उस साइड पे थोड़ा लेटरल अंदर जाएं, इसकी कैविटी के अंदर जाएं, हाँ अंदर जाएं, हाँ ये अब थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा बाहर और यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ऊपर ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट नहीं इस साइड ऐसे ये हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरे हाथ ये पकड़े, ये पकड़े, अब इसके नीचे से ना जहाँ से जिगे ना स्कोप इधर से नीचे आके दिखाएं कि कैमरे में नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अब आपको नजर आ रहा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जिस आप टच करें मिडिल टर्बिनेट को टच करें, मिडिल टर्बिनेट ये दिस और एक्सिला को टच करें, एक्सिला कहाँ है, वो ऊपर एक्सिला है, और लेटरल वॉल जहाँ पे रिज है वो दिखा दीजिए, लेटरल वॉल, दिस इज द लेटरल वॉल, एक्सीलेंट, और दिस इज द सेंटर, एक्सीलेंट। सर किधर होगी सैक लेटरल वॉल, सैक लेटरल वॉल। अगला बंदा आ रहा है आपने, हाँ सर आपको तो हम ओरिजिनल ह्यूमन से करवा देंगे। इसमें सबसे पहले we have an ENT specialist here. He can guide us. We have a मतलब एक actively farmed. We have an ENT specialist here. I think he is going to. टेलीफोन से मैं सर मैं एक ट्रिक हमारी हमारी एक ट्रिक ये होती है कि हम जब भी He sources great. to have a very good assessment ना हम एक इसका ना नोज के अंदर डालते हैं, ठीक है, beautiful, good. कैट्स के बाद रखते हैं, उसके बाद हम ना स्कोप अंदर डालते हैं। It's a good trick. It's a good trick. अब आपको वो बता रहा है कि रफली मीडियल कैंसस यहाँ है। Oh, beauty. ठीक है, सो ये देखिए आपने यूं डाला और इसको बंद कर दिया, अंदर आपने देखा कि मीडियल कैंसस इस एरिया, ठीक है, इस एरिया के अराउंड आपने अपना पॉस्ट, ठीक है, ये देखिए ये आपने यूं डिलीट डाला, बाहर से आपने मीडियल कैंसस के बिल्कुल पास में, उसके बाद आपने स्कोप अंदर डाला और ये आपको एक असेसमेंट देगा कि अच्छा ये एरिया है जहाँ पे मीडियल कैंसस है, ओके, तो मैं इस एरिया में मुझे सबसे ज्यादा चांस है कि सबसे अच्छा पॉस्ट मीडियल कैंसस। अच्छा देखिए कुछ ये भी स्पेसिस्ट कहते हैं कि इनफिल्ट्रेट हम नहीं करते, हम सिर्फ मॉपिंग कर रहे हैं आजकल, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? सर इनफिल्ट्रेट, क्योंकि सर नोज ब्लीड फिर कम करता है। चलिए आप आपकी बारी आप करो। दूसरा सर हम ना वो सोल्यूशन बनाते हैं डॉक्टर बताते हैं, मैं ये डिस्कस सर जाइलोसिन हीमोग्लोबिन और ट्रांसमीन का भी एक एम्प्लीफायर ये से मैं ये जान
अच्छा, अब हमने जो नेजल पैकिंग करनी है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट आप ऑपरेट यूज करते हैं। एड्रेनलिन बहुत स्पीडली अब्जॉर्ब होती है और वो फिर वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कर जाती है। बट ट्रांजामीन आईवी के अलावा जो आप पैकिंग यूज कर रहे हैं उसमें भी उस कॉकटेल में आप यूज करें बहुत फर्क पड़ता है। Transamine, adrenaline, lidocaine with adrenaline and Rhinocin to spray आप करते हैं। राइनोसिन बार-बार सर हमारा वो करते हैं और आपकी नेजल पैकिंग फिर अच्छा डिकॉन्जेस्ट हो जाएगा, एरिया बहुत वाइड हो जाएगा और आप आराम से सर्जरी करेंगे। वो ऐसे तो फिर सर वो ये देखिए जो आपका ओबी होता है ना वो साथ-साथ वो करता है स्प्रे कर सकते हैं सर। उसके अलावा सर लीगली हमें फायदा ये है सर इस केस को देखते ना आई वुड लाइक टू डू द सेप्टो। ओके, मैं सेप्टोप्लास्टी करके ना क्योंकि सर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में जो राइट साइड ऑफ पेशेंट है ना वो हमेशा सर्जन को काम करती है। हमारे एंगल बड़े टेढ़े होते हैं राइट साइड सर। जो लेफ्ट साइड की साइनस सर्जरी या इवन डीसीआर है ना सर क्योंकि वो एक लाइन में चल रहा होता है। राइट के लिए आपको जिसमें एक्सिलरी साइनस बिल्कुल उल्टा चलना पड़ेगा। इस वजह से राइट साइड पे अगर डीसीआर करना है तो मैं हमेशा सेप्टोप्लास्टी पहले करके ट्रेबिनियम को करके सर डिकम्प्रेशन की जो बातें हुई है सर मैं नीचे वाला सारा एक्सपेरिमेंट जरा मकबूल बहुत करते हैं माशाल्लाह से सर का हमने यहाँ पे कर सकते ये पूरा मिनट टर्मिनेट ये रहा बाकी इश्यूज भी आपको बता सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा इनफ्रैक्चर आउटफ्रैक्चर यस देखिए अच्छा जो इंफॉर्मेशन वगैरह है ना वो हो जाएगा हमारे पास उससे ज्यादा केयरफुल रहे ये लोग चैनल पे डैमेज कर रहा है रॉ है कोई नाम से एग्जैक्टली आपको लगा कॉमन एग्जैक्टली सर बिल्कुल हमारे पास जो होता है ये जो प्रोब है और द डायोड लेजर्स वगैरह की जो प्रोब है वो जो बीआर वाली वो किनारे चले सर बेसिकली ना उसमें चक्कर ये है कि एंडोस्कोपिक में आप दूसरा लेटरल वॉल को सपोर्ट करना है आपने सर ऑस्टियम इतना बड़ा बनाना है you literally have to destroy the wall so much there is no chance ये मिडिल टर्मिनेट sir अंदर वो ये वो फेल होने की वजह और सर हमारे बात है अब देखें यू हैव टू मेटोमाइसिन से पीछे रहना 5 to 10 सेकंड्स के लिए आप पीछे आना पड़ेगा तो पीछे और एक बिल्कुल स्पेगो की तरह ना आपका दोनों सर नहीं वो कहते हैं ऑस्टियम ये दिस इज सेप्टम ये सेप्टम ये सारा एंडोडीसीआर नहीं वो एंडोस्कोपिक डीसीआर का नहीं था ऑडिटिव कंप्रेशन वो फिर उसको रेट्रो नहीं
अगर इसका कैमरा चलता है तो and it should be away, complete away of the ये away of comfortable ये आपको सिर्फ ये वो बेबल कॉपी का लेटर ये क्या है अब बस इसको फिक्स करके मेरी ऑस्टेंशन को अच्छा इतना ना हार्ड भी नहीं होता लेकिन बेबल के अंदर आपका ऑपोजिट होता है ठीक है माइक पे माइक ऑन है मैं कर Next section is having long start time intake seats. So,